Assalamu alaikum. I welcome all of you to this online class, and today our topic for the BG second semester students will be fundamental rights in Indian Constitution. As you all know that our paper for the second semester BG students with political science as one of their subjects is Indian government and politics. Let's not waste our time. I will directly go to the topic fundamental rights in Indian Constitution. They are enshrined in part 3rd of Indian Constitution. इंडियन संविधान का जो पार्ट 3rd है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील कर रहा है. जहाँ तक आर्टिकल्स का ताल्लुक है, आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के साथ डील कर रहा है. और इन फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बारू किया था. यूएस में हम इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जहाँ तक राइट्स का ताल्लुक है. इनफैक्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हुई थी वो सिर्फ इन राइट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हुई थी. ओरिजिनली in Indian Constitution there were 7 types of fundamental rights. 7 किस्म के फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे इंडियन सिटीजन्स को, जिसमें से कुछ राइट्स ऐसे भी है जो फॉरेनर्स भी एंजॉय कर सकते हैं who are living within the territory of India, within the boundary of India. राइट जो 7 किस्म के राइट्स जो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे वो इस तरीके से है, इस प्रकार से है, इस सीक्वेंस में है. राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में दिए गए हैं. राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 में दिए गए हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 टू 24 में दिए गए हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 में दिए गए हैं, 25 टू 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30. राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था वो आर्टिकल 31 में था. और जहाँ तक आर्टिकल 32 का ताल्लुक है जो कि अहम राइट माना जाता है फंडामेंटल राइट्स में से, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. जो ये फंडामेंटल राइट्स है इनको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. These fundamental rights are guaranteed by constitution to all citizens, to all persons. किसी किस्म का कोई तफरुक नहीं है, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. We know India consists of different religions, India consists of different castes, different races, different linguistic groups, या people with different occupations, and there is no sort of difference between these people when it comes to fundamental rights. Everyone enjoys these fundamental rights.
These fundamental rights are meant to promote the ideal of political democracy. Political democracy का ideal promote करने के लिए fundamental rights दिए गए हैं. We know democracy की कुछ dimensions होती है. Social dimension होती है, political dimension होती है और economic dimension होती है. ये जो fundamental rights है ये डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल डायमेंशन को अचीव करने के लिए दिए गए हैं इंडिया में. और जहाँ तक सोशल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन का ताल्लुक है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रियलाइज करते हैं. These fundamental rights prevent the establishment of authoritarianism and despotic rule in the country. इस कंट्री में अथॉरिटेरियनिज्म को ख़त्म करने के लिए, डेस्पोटिक रूल का खात्मा करने के लिए, डेस्पोटिक रूल और अथॉरिटेरियनिज्म वो रूल होता है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, where people do not have any say, where whosoever is in power. In despotism or in authoritarianism, whosoever is in power, he is enjoying it. He is not respecting the people's aspirations. He is not respecting the people's will. So these fundamental rights, they prevent, they act as a brake on authoritarianism and despotism. These fundamental rights protect the liberties and freedoms of the people. लोगों के liberties, freedoms को protect करने के लिए, ensure करने के लिए fundamental rights दिए गए हैं. These fundamental rights operate as the limitations. They act as a restrictions on the tyranny of the executive and laws of the legislature. We know that there's a concept called power sharing. Horizontal form of power sharing. We know that power is being divided among legislature, executive and judiciary. We know all these three wings of government have been given the task to frame laws, to implement laws and to adjudicate laws. We know that these people belonging to legislature, people belonging to executive are power centric, and this judiciary is independent. So we also know that India has a provision called supremacy of the constitution. So in order to ensure the supremacy of the constitution, we have an independent judiciary. This judiciary has a power called judicial review. So whenever executive passes any order, whenever executive passes any action and legislature makes any law, whether this law is in accordance with the constitution, whether this executive order is in accordance with the constitution, this all is being done by this judiciary. We are also having these fundamental rights try to ensure a rule of the law, not a rule of man. In India, we should have a rule of law. It means that everyone is equal in the eyes of the law. Everyone should be treated equally by law, and there should not be a rule of man. We also know that these fundamentals are named as they are guaranteed and protected by the constitution itself. इनको guarantee भी constitution करता है और constitution ही इनको protect करता है. That's why they are known as fundamental rights. They are also known as fundamental rights because they try to ensure the all-round development of the individual. एक individual की पूरी development को ensure करने के लिए these fundamental rights दिए गए और इनको नाम इसीलिए दिया गया है fundamental rights. I think this lecture, which was a brief, will be very much helpful to the students in general, to all the students in general and the second semester students in particular. Thanks for all.